When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember no matter where you are, Allah knows, Allah knows. When you जो टॉपिक आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पावरमेंट, राइट? एवरीवन वांट्स टू बिकम एम्पावर्ड। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं एम्पावरमेंट क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंटरेक्ट करना चाहूँगा कि व्हाट्स द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ एम्पावरमेंट? कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, इंडिपेंडेंस, टू बिलीव इन योरसेल्फ, सेटिस्फेक्शन, राइट? ऑल दीज थिंग्स दे कम टू आवर माइंड। यस, ये सारी एक पर्सपेक्टिव है एम्पावरमेंट का। एम्पावरमेंट बेसिकली है क्या, इसकी फिलॉसफी क्या है, एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, एम्पावर क्यों होना चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम सुना आपने? What is self actualization? To realize your strengths. When you realize your strengths, when you know about yourself, when you know your weaknesses, your strengths, तो फिर इंसान बहुत बड़े-बड़े काम करता है, राइट? जिंदगी में ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से इसका बहुत ताल्लुक है एम्पावरमेंट का। और इसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ नेसेसिटीज हैं, कुछ क्वालिटीज आप सब में होनी चाहिए, मुझ में होनी चाहिए, जो कि हमें एम्पावर करे लाइफ के चैलेंजेस गुजारने के लिए, लाइफ के चैलेंजेस को पास करने के लिए कुछ क्वालिटीज हमें होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होने चाहिए। अदरवाइज लाइफ जो है हमें बहुत मार लगाएगी, सीधी सी बात है, राइट? अब कौन सा वो सिस्टम है जो हमें एम्पावर करता है इन द ट्रू सेंस? हमने तो एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ा ना, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, गुड स्पीकिंग स्किल्स, इंडिपेंडेंट, ठीक है? ये एक पर्सपेक्टिव है, बट देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव विद रिगार्ड्स टू एम्पावरमेंट। and whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows.